So namaskar all of you. So OS Mains Test Series 2023 रो टेस्ट नंबर 1 रो आज हमर डिस्कशन रो पार्ट 3 अछि जोटा कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 रो क्वेश्चन नंबर 15 डिटेल्स रे डिस्कस करिबा। ऑलरेडी हमें सेक्शन ए जोटा कि हमर 10 मार्क्स रो क्वेश्चन रहउची क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 10 सेटा डिस्कस कर सरचु। एक्सक्यूज मी। आज हमें क्वेश्चन 11 टू 15 माने जोड़ा 15 मार्क क्वेश्चन उडा अछि से गुडा डिस्कस करिवा। सो क्वेश्चन 1 टू 10 जोड़ा 10 मार्क क्वेश्चन थिला तो अपन देखले कि अपन को 7 मिनिट भीतर से गुडा लिखिया पे पड़िबो। विद इन 7 मिनिट्स यू हैव टू कंप्लीट दैट। ओके, आज जोड़ा हमें 15 मार्क क्वेश्चन देखुछु एडा पाका पाकी अपन को 15 मार्क्स पाखा पाखी 11 मिनिट्स रे अपन ताको सारिबे। ओके, तेणु प्रथम रु जो आप प्रिपेयर करेंगे यहीटा आपन को माइंड रे रखिबार अछि सो दैट आपन को किछि ओके प्रॉब्लम होबनी आपनकर राइटिंग स्पीड टा सेटा ठीक रहइबो जेमती। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि आपन को मेनली 11 मिनिट रे क्वेश्चन उडा सारिबार अछि। सो 11th क्वेश्चन को आसंतु, हाउ डिड द इंडियन New wave cinema movement redefine the narrative and aesthetic approach of Indian filmmaking in post-independence India। तो filmmaking उपरे Indian films उपरे question टा अच्छी post-independence period। ठीक है, जोटा कि हमारा आर्ट एंड कल्चर रे अपन जदि माइक्रो सिलेबस टा देखिबे जोटा कि अपन को टेस्ट सीरीज रो ऐप रे जोटा दिया हिची कि जेतोळे गोटे पर्टिकुलर चैप्टर कि गोटे पर्टिकुलर सिलेबस रे जो पार्टटा देछि ता अंडर रे आउ कोन कोन सब पार्ट्स अछि सेटा तो सिलेबस रे दोनी, तेणु माइक्रो सिलेबस टा आपण से थरे पाई जिबे। ओके, तो से माइक्रो सिलेबस को नै कि ही आपण को प्रॉपर प्रिपरेशन टा करिवार अछि। तेणु 15 मार्क आपणकर रहउछि एटा 11 मिनिट रे सारिवार अछि। तो फर्स्ट डायरेक्टिव कीवर्ड्स आउ जो जोड़ा इंपोर्टेंट पार्ट्स अच्छी ताको अंडरलाइन करंतु। ओके, रीडिफाइन द नैरेटिव ओके एंड एस्थेटिक अप्रोच ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ओके, तो फर्स्ट आपनकर एटा जो 250 वर्ड्स अपन लिखिबार अछि आरो जो मॉडल आंसर टा दिया हिची दैट इज 268 वर्ड्स। 268 वर्ड्स रो मॉडल आंसर आपनकर दिया हिची। सो इवन 300 वर्ड्स पर्यंत भी इट इज ठीक ठाक अछि आपण कहि परिबे काहे कि ना एक्सक्यूज मी वर्ड्स जत्ते भी आपनकर रहउची सेटा ताको एते एम्फासिस न देकी हमें समय को एम्फासिस दबा। नॉर्मल आपनकर राइटिंग स्पीड रहउची 20 टू 25 वर्ड्स पर मिनिट किंबा रहिबा कथा परीक्षा पई। आपण जदि देखिबे 11 मिनिट रे यदि मु 20 टा वर्ड लिखुची ताले 220 पाखा पाखी आपनकर जाउची और जे 25 वर्ड पाखा पाखी लिखुचंदी तो सही 268 270 275 सही पाखा पाखी से माने लिखि परिबे जो माने पर मिनिट 25 वर्ड्स कोने लिखि पाउछन। तेणु आपण जदि समयटा देखिबे आपण केबे भी वर्ड लिमिट रु बेसी बाहर को जिबे। ओके, तो कौन कौन पॉइंट्स ताले एथरे लिखिबा। तो प्रथम हैला से कहूची कौन रीडिफाइन द नैरेटिव, केमिति नैरेटिव को रीडिफाइन कला, एस्थेटिक अप्रोच को केमिति रीडिफाइन कला, दीटा जिंस से पचौची। ओके, तापरे आउ गोटे जिंस से पचौची कौन नेक्स्ट पार्ट रे। ओके, ए दीटा आ तार इंपोर्टेंस टा कौन कि से इन्फ्लुएंस केमती कला कल्चर और इंस्टीट्यूशंस को, राइट। सो दी लाइन रो गोटे आपण इंट्रोडक्शन दे परिबे जो थरे आपण लिखिबे कि फिल्म्स केमिति ओके 19 आपण पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 60s रे ओके
न्यू वेव सिनेमा मूवमेंट पचारछि सेटा लेट 1960s रे बेसिकली ओके तार डेटिंग जदि आमे करिबा इट बिकेम मोर रियलिस्टिक सोशल क्रिटिक आउ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग सेथरे ओके तार मेन फीचर्स बोली अपन लिखि परिबे सो फर्स्ट नैरेटिव redefinition सेटा से पचारछि हाउ इट रीडिफाइन द नैरेटिव ओके तो आ अंडर में कौन कौन पॉइंट्स लिखि परिबा नैरेटिव रीडेफिनेशन केमती आपणकर हैला ओके तो प्रथम जिनस हैला आगुरु जो टाइप रो सबु सब्जेक्ट्स थिला सेही सब्जेक्ट्स को माने माइथोलॉजिकल फिल्म्स हे गला से थ्रू बाहरी की रियलिज्म ऊपर बेसी आपणकर फोकस रहिला एक्चुअल जो डेली स्ट्रगल रहउची गोटे मनीषर सोशल इश्यूज करिके रहला सेही टाइम रो जोडा इंपोर्टेंट इश्यूज थिला आउ एठी गोटे जिनस आपनको किछि एग्जांपल्स तो आपै पड़िबो जेमति कि आपण मॉडल आंसर रे देखंतु एठी से देइछि सत्यजित राय कर पत्थर पांचाली ठीक अछि तार गोटे एग्जांपल आउ बहुत गोटे एग्जांपल से देइछि सो नंबर 1 हैला फोकस ऑन रियलिज्म ओके नैरेटिव रिडेफिनेशन तेणु आस्ते आस्ते रियलिज्म ऊपर फोकस जोता कि कौन कौन सोसाइटी रे चलची सोशल इश्यूज से सब जिनस एग्जांपल आपण एथरे सत्यजित राय कर पत्थर पांचाली दे परिबे ओके सेकंड क्वेश्चन और सेकंड पॉइंट आपण नै परिबे कि से सोसाइटी सोशल इश्यूज हिसाब रे जदि हमें देखिबा ताले सोशल द फिल्म्स जोड़ा सब बनाला दे वर लाइक सोशल कमेंट्रीज ओके किछि एग्जांपल्स आपण दे परिबे लाइक श्याम बेनेगल कर अंकुर हैला जो तरह की क्लास इनइक्वालिटी हमें देखौतलु ओके सेमती निशांत हैला अनदर इंपोर्टेंट फिल्म ऑफ दिस पीरियड जो तरह की लैंडलॉर्ड मानकर जो फ्यूडल ऑपरेशन थेला सेटा देखाउतला ओके सो नेक्स्ट पॉइंट आपण दे परिबे सोशल कमेंट्री विथ सम एग्जांपल्स आउ कौन पॉइंट्स हमें दे परिबा सो जो प्रोटागोनिस्ट माने थिले हीरोज माने जो माने थिले से माने बहुत ही ताका कैरेक्टर आगुर जेमती पृथ्वीराज कपूर आउ से टाइम रो जो आपनकर पूरा सिंपल कैरेक्टर्स थिला एठी कैरेक्टर्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स काहे कि ना दैट बेसिकली शोड द इट रिफ्लेक्टेड द रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज okay so the characters became more layered heroes became more layered and complex okay just like the real world माने रिलेट करी हबो जेमति गोटे लोकर डिफरेंट शेड्स अछि ओके तेनु जोटा हमें फर्स्ट पॉइंट रे देखथिलु रियलिज्म ऊपर फोकस तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आउ कौन कौन एथरे हमें पॉइंट्स दे परिबा सो एटा हमें फर्स्ट पार्ट ही चलची हमर नैरेटिव रो रिडेफिनेशन केमते हला ठीक अछि तापरे जो प्राय फिल्म्स आपण देखिबे से जो स्टोरीज उडा थिला से गुडा रीजनल कल्चर और रीजनल लैंग्वेजेस रो अणा हिथिला प्राय ओके सो रीजनल नैरेटिव्स ठीक अछि सो रीजनल नैरेटिव्स ओके चारटा पॉइंट हमें ऑलरेडी लिख सारलुनी तापरे सेही टाइम रो जो लेट 1960s रो फिल्म्स उडा थिला तो दैट showed the themes of transition
ओके सोसाइटल ट्रांजिशन रो थीम्स गुड़ा देखोला जेमति कि मॉडर्नाइजेशन हे गला अर्बनाइजेशन हे गला ओके रूरल एरिया रे जो तांकर चेंजेस होतला तो तार बहुत गुड एग्जांपल्स आपण दे परिबे मंथन वाज अ वेरी फेमस मूवी ओके जो थरे कि ए जो ट्रांजिशन to modernization, transition from rural to urbanization. Okay, rural areas रे भी जो change in dynamics से सब जिनस गुड़ा आपण लिखि परिबे. So themes of transition. इलेवेन मिनिट्स से सारिबार अछि तेणु कीप इन माइंड आपण को से हिसाब रे गोटे लाइन सब पॉइंट पे लिखिया पे पड़िबो ओके सो फर्स्ट पार्ट टा में देखिलो रीडिफाइन द नैरेटिव ओके नैरेटिव रिडिफिनेशन केमती करा एक्सक्यूज मी ओके एस्थेटिक अप्रोच ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग ओके रिडेफिनेशन ऑफ द एस्थेटिक अप्रोच जो स्टाइल जो टेक्नोलॉजी से माने यूज करूथिले ओके सेथरे भी चेंजेस आसिला राइट सो नेक्स्ट हेडिंग आमे नबा एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन सो एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रे जदि हम देखिबा कौन लिखिपार आम प्रथम तो है टेक्निक्स ओके तो मिनिमलिस्ट टेक्निक्स आपणकर यूज होता जमती कि नेचुरल लाइटिंग यूज करते डायरेक्टर्स माने कैमेरा जोड़ा थिला से गुड़ा ट्रॉली बेस न होई कि हैंड हेल्ड कैमेरास थिला प्राय ओके आउ ऑन लोकेशन शूटिंग ठीक अछि तो ऑन लोकेशन शूट्स तो एक गुड़ा मिनिमलिस्ट टेक्निक्स गुड़ा ओके तो बहुत गुड़े एग्जांपल से आपण नहीं पारिबे ए एग्जांपल्स गुड़ा कोन दीज आर कल्ट क्लासिक्स ए जो एग्जांपल्स हमें नहीं छु किबा आपनकर जो मॉडल आंसर रे देछि ओके जेमति कि ऋत्विक घातक कर ओके मेघे धाका तारा ओके सो सेटा गोटे एग्जांपल आपण केमति मिनिमलिस्ट टेक्निक यूज करिकी ओके आपणकर बहुत भलो गोटे एस्थेटिक फील आपण फिल्म रे देखा गला सो ता अंडर रे फर्स्ट पॉइंट वी कैन टेक इज मिनिमलिस्ट टेक्निक ओके मिनिमलिस्ट टेक्निक भितर आमे मेनली नेचुरल लाइटिंग ओके बेसिक हैंडहेल्ड कैमरास ऑन लोकेशन शूट्स एगुड़ा आमे एथरे ऐड करि परिबा राइट तापर आसिला सिंबलिज्म ओके सिंबलिज्म अच्छा एबे सिंबलिज्म रे कोन आमे लिखिबा जो सब प्रॉप्स गुड़ा यूज होतला विजुअल्स आर्टिस्टिक विजुअल्स मेटाफोर्स थिला ओके तो सेथरे आपणकर बहुत ही माने डीप मीनिंग सेथरे थिला ओके एथरे एग्जांपल्स आपण जो देखिए मृणाल सेन कर भुवन शोम ओके एंड मेनी अदर फिल्म्स आर देयर ओके ए जो फिल्म्स रो एग्जांपल्स दिया हिची मॉडल आंसर रे एगुड़ा सब प्राय कमर्शियल सिनेमा नुह ठीक अछि सेतबले भी ऐसा जो कमर्शियल सिनेमा जोटा हमें कहूँ सेटा एमिति आजिकाली टाइम रो डेवलप नथिला ठीक अछि सो दीज वर मोर और लेस कल्ट क्लासिक्स ओके जोड़ा कि बहुत गुडे अवार्ड्स की सेमती किछि आपणकर ओके बहुत वेल नोन फिल्म्स करिका जोड़ा हमें डिस्कस करू ओके तापर आ गोटे जिनस आसिला म्यूजिक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आपणकर नेक्स्ट
ओके तो एस्थेटिक सहित आपनकर एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी रहला ओके सो नुआ टाइप रो म्यूजिक्स जो थरे कि बैकग्राउंड म्यूजिक करिका ओके तो आगुरु जो टाइप रो यू नो गोटे आपण कहि परिबे गोटे फार्मूला टाइप रो सॉन्ग्स गुडा थिला ओके गोटे सीक्वेंस रे सॉन्ग्स गुडा थिला गोटे सॉन्ग तार डिफरेंट सीक्वेंसेस आपण ओके पाउथिले पुराना फिल्म से जोटा कि 50s आउ अर्ली 60s रो सेथरु चेंज है कि एबे एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक नुआ म्यूजिक ओके ऐड हवा स्टार्ट हैला सो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक तो सेटा आपण नेक्स्ट पॉइंट लिखि परिबे तापरे आर्टिस्टिक फ्रीडम एथरे कोन ना आउरी इंडिपेंडेंस मिलला क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग ओके आउ बहुत ही अनकन्वेंशनल सेही टाइम को अनकन्वेंशनल आपणकर स्टोरीज गुड़ा आसला जोड़ा कि बहुत ही कह माने आजिकल भाषा आप बोल्ड स्टोरीज कहि परिबे जोड़ा कि से समय रे ओके से समय टू बहुत आगे रे से स्टोरीज गुड़ा ओके सो आर्टिस्टिक फ्रीडम नेक्स्ट पॉइंट जोटा आम एथर लिख परिबा बहुत गुड़े फिल्म्स सेतबले डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रो हबा पई स्टार्ट हैला सो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल अप्रोच जेमती सबुट वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज दो बीघा जमीन ओके जो थरे कि लोकंकर इमोशनल कनेक्शन टा रहिला आउ ऑथेंटिसिटी भी बढ़िला तार सो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल अप्रोच ओके तो जो सेकेंड पार्ट थिला एस्थेटिक अप्रोच सेतरे भी हमें 5टा पॉइंट्स देलु फर्स्ट जोटा थिला सेतरे भी 5टा पॉइंट्स देलु ऑलरेडी 10 पॉइंट्स हमें दे सचु एक्सक्यूज मी सो मोर और लेस आपण कहि परिबे कि हमें इंपोर्टेंट पार्ट्स गुड़ा कवर कर सचु आउ गोटे जिनस एथरे हमें ऐड करि परिबा कि ए जो फिल्म्स रे चेंज हैला तार इन्फ्लुएंस कौन हैला कल्चर उपरे आउ इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द फिल्म्स सो नेक्स्ट कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस cultural and institutional influence okay so प्रथम important आपण कहि परिबे चेंज किंबा इन्फ्लुएंस हला कोन ना जो फिल्म सोसाइटीज थिले स्टेट लेवल रे हो नेशनल लेवल रे हो आउ गवर्नमेंट रो जो बॉडीज उडा अछि जोटा कि फिल्म प्रमोशन और फिल्म डेवलपमेंट पई थिला ओके सो से माने जेतले देखिले कि न्यू वेव सिनेमा ओके सेटा गोटे सोसाइटी पई किंबा सोसाइटी रो गोटे मिरर रिफ्लेक्शन देखौची ताले से माने सेठी बेसी भी एनकरेज ताको कले ओके फंडिंग भी बेसी आसिला सो फर्स्ट हला सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट and film societies ओके आउ कौन आपण एथरे पॉइंट्स दे परिबे जेहेतु हमें देखिलु कि रीजनल फिल्म्स रो एथरे बहुत गोटे इंपोर्टेंट रोल थिला सो रीजनल फिल्म मेकर्स को आउरी अधिका एम्पावर करा गला ओके सो empowering regional filmmakers empowering regional filmmakers
ओके आउ गोटे पॉइंट आम दे परिबा कि जेहेतु प्रमोशन है इंडियन फिल्म्स आउरी अधिका तो इंटरनेशनल स्टेज रे भी यही न्यू वेव फिल्म्स गुड़ा एक्सेप्टेड है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तांको मिलला ठीक अच्छे सो दुनिया रे जो सब बड़ बड़ फिल्म फेस्टिवल्स अच्छी सेठी से माने गले राइट सो ग्लोबल अक्लेम ओके सो ताले आमे कौन कहि परिबा कंक्लूजन रे कि रियलिज्म आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी ओके तो एगुड़ा मेन चेंजेस न्यू वेव सिनेमा आणला आउ इट रियली एक्सपेंडेड द रीच ऑफ इंडियन सिनेमा इंडिया भितर भी आउ बाहर भी ओके सो जो क्वेश्चन थिला हमर हाउ डिड इंडियन न्यू वेव सिनेमा मूवमेंट redefine the narrative and aesthetic approach of Indian filmmaking in post independence period तो यही पॉइंट्स गुड़ा हमको मेनली लिखिबार अच्छे तो एटा इंडियन फिल्म्स ऊपर क्वेश्चन आछ क्वेश्चन 12 को आसंतु सो दिस इज क्वेश्चन 12 एटा गोटे एटा बहुत थोड़ा पढ़ी जीबी कि डिफरेंसेस कौन जैनिज्म और बुद्धिज्म रो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म क्वेश्चन नंबर 12 how does the philosophical foundations of Jainism contrast with that of Buddhism despite their shared cultural origins okay philosophical foundations रे कौन difference अछि although they have shared cultural origins अर्थ कौन ना अपन जो देखिए जैनिज्म बुद्धिज्म सेगुड़ा डेवलप कले दे वर बॉर्न ओके बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस जो ब्राह्मणिकल रिलीजन थिला सेथरे जो इश्यूज गुड़ा थिला प्रॉब्लम्स गुड़ा थिला कास्ट रो डिस्क्रिमिनेशन रो ओके एंड आल्सो द रेबेलियन ऑफ द क्षत्रियस ओके कि you know we win the war and जते सब कॉन्क्वेस्ट आमे करचु तो ब्राह्मण्स मानकु कोन पई ओके सबुटु हाईएस्ट ऑर्डर रे रखाई बिकॉज बोथ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ वेर क्षत्रिय प्रिंस ओके सो एनीवे एक्सक्यूज मी सो डिफरेंसेस केतेटा आपण दे परिबे ओके सो इंट्रोडक्शन रे लिखिबे से कि ओरिजिन तांकर कल्चरल ओरिजिन ता सेम बट तांकर फिलोसॉफिकल लेवल रे बहुत गुडे डिफरेंसेस अछि ओके आउ केमिति आपन को सेटा एक्सप्लेन करिवार अछि गोटे पॉइंट नेबे जैनिज्म कोन कहउछि से पॉइंट विषय रे बुद्धिज्म कोन कहउछि से पॉइंट विषय ओके तो फर्स्ट आसिला आपनकर कांसेप्ट ऑफ लिबरेशन ओके जोटा कि आपण कंपेयर करिवे मोक्ष आउ निर्वाणा भितर ओके यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोक्ष जोटा कि आपण जैनिज्म रे पाउचंती तो जैनिज्म रो कॉन्सेप्ट कोन ना मोक्ष पाया पई आपण को एक्सट्रीम पेनेंस करिया पड़िबो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ हार्म प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल ओके जो कर्मर बॉन्डेज अच्छी कार्मिक बॉन्डेज तादरू आपन को बाहरिया पे पड़िबो ठीक अछि बुद्धिज्म ऑन द अदर हैंड निर्वाणा रो कांसेप्ट रे बिलीव करे लिबरेशन एंड दैट इज थ्रू द मिडल पाथ ओके दैट यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम्स नाही बहुत अधिका नाही पूरा कम ओके सो मिडल पाथ रे जिबे विजडम एंड माइंडफुलनेस ओके सेटा जदि आपण फॉलो करचंती ताहले आपण निर्वाणा पाई परिबे सो द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष एंड निर्वाणा सेटा आपण को एथर लिखियार अछि कांसेप्ट ऑफ लिबरेशन ओके नेक्स्ट जोटा कि डायरेक्टली क्वेश्चन रे पचारची
कोर फिलोसॉफिकल बिलीफ्स रे कौन डिफरेंस अछि सो सेकंड पॉइंट कोर core philosophical beliefs. Okay, so core philosophical beliefs re Jainism ro, okay, that basically focuses on anekantavada, which means there are multiple perspectives of life. Okay, plus there should be absolute non-violence. Okay, and that does not only include living beings but even ओके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जोड़ा टेबल चेयर तारो भी सोल अच्छी ताको भी काटिबो राइट सो एनिमल्स हैला ह्यूमन बीइंग्स हैला इवन वर्म्स हैला ओके तांकर भी लाइफ अच्छी इनफैक्ट दैट इज व्हाई जैनिज्म वाज अगेंस्ट एग्रीकल्चर आल्सो केना अपन जदी फील्ड को प्लो करिवे ताले सेतरे जो ऑर्गेनिजम्स जोड़ा अछन जेमति कि अर्थवर्म्स हैले से माने तांकर डेथ हेजु okay so anekantavada multiple perspectives buddhism re jodi ame dekhiba the four noble truths are there and the eightfold paths are there okay seita apanku core philosophical beliefs lekhibar achi that is your four noble truths and the eightfold paths right tapare नेक्स्ट आसला भगवान को ऊपर विश्वास अच्छी कि नहीं ओके द रोल ऑफ डीटीज डू दे बिलीव इन डीटीज सो ओके रोल ऑफ डीटीज जैनिज्म रे बेसिकली जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन एनी क्रिएटर गॉड माने कि गॉड थिले जे कि यूनिवर्स को क्रिएट करछन सो इट रिजेक्ट्स द क्रिएटर गॉड्स ओके एंड इट बिलीव्स ऑन लिबरेटेड सोल्स जो तीर्थंकर तांकर थिले राइट सो इट रिजेक्ट्स क्रिएटर गॉड्स बट ओके इट रिवेयर्स और बिलीव्स द लिबरेटेड सोल्स और द तीर्थंकरस okay Buddhism Robi says it does not rely on any creator god okay but deities कर रोल अच्छी बुद्धिज्म रे symbolic figures okay जो spiritual practices रे symbolic figures हिसाब रे बुद्धिज्म okay आपनकर deities है symbolic figures तांकु से मानुथिले right so एटा हला थर्ड पॉइंट रोल ऑफ deities फोर्थ पॉइंट that is the scriptural focus को scriptures सबु scriptural focus so you know about Jainism okay so that is the agamas right जो थरे की जो माने भिक्षुस थिले भिक्षुनीस थिले monks okay and nuns आउ common लोक householders तांको पई सब कोड ऑफ कंडक्ट थिला रूल्स थिला ओके द आगमस ठीक सेमती बुद्धिज्म रे भी अपन को त्रिपिटकस थिले ठीक अछि सो जोटा की लोकन को आउ जो माने भिक्षुज एंड भिक्षुनीस थिले तांको गाइड करिवे ओके केमिति एथिकली से रहिबे and all the rules like for meditation and all those things were there so scriptural focus agamas and tripitakas Jainism and Buddhism right tapare the theory of karma or philosophy of karmic actions philosophy of karmic actions means कर्म ऊपर से माने केमती बिलीव करथिले ओके सो जैनिज्म रे कोन थिला ना कर्म और एक्शंस ताको से गोटे फिजिकल ओके
जिनस बोली भाबुतिले आउ जहा आपण करूचंती आपणको सोल संगे सेटा बाइंड हो जाउची तेणु आपण जदि किछि खराब काम करूचंती देन दैट वुड रिक्वायर प्यूरिफिकेशन ओके सो it viewed karma as a physical substance attached to the soul Jainism okay किंतु बुद्धिज्म कौन सेटा कर्म को गोटे मोरल कॉजेशन हिसाब रे नौथिला ओके एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर रीबर्थ आल्सो ओके सेटा बुद्धिज्म रो कांसेप्ट थिला ओके बट इट यू नो सेटा को से माने मटेरियलिज्म किंबा एज ए फिजिकल सब्सटेंस सेटा देखु नथिले कर्म वाज नॉट समथिंग okay it was not a physical substance एटा moral causation okay according to buddhism तो एटा गोटे difference आपण लिख परिबे कि कर्म और कर्म रो फल okay the karmic actions philosophy of karmic actions सेतरे point of view रे कोन कोन difference थिला तापरे next ध्यान किंबा meditation practices ओके तो एथरे कौन कौन डिफरेंस थिला मेडिटेशन प्रैक्टिसेस रे ओके सो जैनिज्म बेसिकली स्ट्रिक्ट मेडिटेशन ओके बहुत स्ट्रिक्ट मेडिटेशन ऊपर फोकस करथिला तार मेन एम कौन थिला जैनिज्म रे मेडिटेशन रो वर्ल्डली डिजायर्स रु आपण केमती अलगा हेबे ओके बुद्धिज्म रो जो मेडिटेशन थिला सेटा बेसिकली दैट कंसंट्रेटेड ऑन माइंडफुलनेस एंड विपासना ओके टू डेवलप अवेयरनेस एंड कंपैशन सेटा मेन एम थिला मेडिटेशन रो बुद्धिज्म रे ओके माइंडफुलनेस एंड विपासना ओके सो सेटा एमती जैनिज्म में पूरा स्ट्रिक्ट मेडिटेशन थिला कि वर्ल्डली अफेयर्स रु वर्ल्डली डिजायर्स रु आपण अलगा ही जिवे सेटा बुद्धिज्म रो मेडिटेशन रो एम नथिला ओके तापरे नेक्स्ट आसिला आपणकर एथिकल एम्फासिस ethics upare focus okay ethical emphasis focus on ethics right so jainism रे जोटा पर्सनल ऑस्टेरिटी निजे आपण बहुत कष्ट रे पूरा मिनिमलिस्टिक वे रे रहिबे ओके आउ फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक द वाउज ऑफ सेलिबेसी एंड ट्रुथ सबले सत्य कहबे सेलिबेसी मेंटेन करिवे बुद्धिज्म रो जेतु मिडिल पाथ रो कांसेप्ट थिला तेनु जो बुद्धिस्ट संघ थिला ओके तो सेथरे कम्युनिटी ओरिएंटेड एथिक्स थिला ओके माने एंटायर संघर जेमती वेलफेयर हब ओके सो कम्युनिटी ओरिएंटेड एथिक्स राइट सो एगुडा किछि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस सेथरे आपण कहि परिबे ए डिफरेंस गुडा को लेवल्स रे अछि मेटाफिजिकल लेवल रे अछि एथिकल लेवल रे अछि स्पिरिचुअल गोल्स तांकर अलगा थिला राइट सो ए जो मॉडल आंसर आपनकर दियाइछि एथरे आपनकर 263 वर्ड्स okay which is absolutely fine 250 words भितर हबा कथा 263 is fine बुझ पले next let us come to question number 13 so question 13 basically is based on the Vaishnavite traditions जो वैष्णव आचार्य माने थिले okay तांकर contribution so this is the question number 13 how do the metaphysical foundations laid by Vaishnava acharyas influence the devotional practices in contemporary Hinduism तो जो वैष्णव आचार्यस थिले ओके से माने केमती इन्फ्लुएंस करचंती एबेकार जो प्रैक्टिसेस अछि आपण
हिंदुइज्म रे फॉलो करछंदी ओके ता संगे कंपेयर करिया पे कहिछ तो आपण इंट्रोडक्शन दे परिबे ओके जो प्रोमिनेंट वैष्णव आचार्य की वैष्णवाइट जो मान थिले रामानुज हो गले माधवाचार्य हो गले चैतन्य महाप्रभु हो गले ओके सो पॉइंट्स कौन आपण देबे तो फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति एक्सक्यूज मी ओके सो भक्तिर जो कॉन्सेप्ट थिला जेमती कि ओके क्वालिफाइड मोनिज्म रामानुजंकर विशिष्ट अद्वैत राइट सो ता ऊपर आपण लिखि परिबे राइट कि पर्सनल रिलेशनशिप विथ द गॉड इन दिस केस विथ लॉर्ड विष्णु ओके भक्ति ऊपर बेसी फोकस थिला राइट जो थे कि फॉर एग्जांपल डेली वर्शिप थिला ओके चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ गॉड थिला जप जोटा आपण कहउछंती सो एंड देन यू हैव माधवाचार्यस द्वैत ओके सेटा भी गोटे कांसेप्ट थिला भक्ति रो ओके डुअलिटी ऑफ गॉड एंड सोल ठीक अछि सेथरे भी आपण जदी आपण देखिबे कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड ओके which is शरणागति ओके एंड तार अलगा भी सबू मैनिफेस्टेशन थिला जेमती नाम जप हैला ठीक अछि सो कांसेप्ट ऑफ भक्ति सेटा अपन लिख परिबे तापरे कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी तो एटा एमती नै कि एका ही अपन करबे एटा कम्युनिटी लेवल रे होतिला एंड गॉड वाज एक्सेसिबल टू एवरीवन एमती नो कि एई माने ही पूजा कर परिबे ए माने कर परिबे ओके सो कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ठीक है कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी सो सेतरे आपण एग्जांपल्स दे परिबे जेमती चैतन्य महाप्रभुंकर ओके द कांसेप्ट ऑफ प्रेम भक्ति ओके आउ कम्युनिटी बेस्ड चैंटिंग ऑफ द मंत्रस ओके हरे कृष्णा मंत्रस हे गला कि अदर मंत्रस रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड हिज अवतारस ठीक है तापरे सोशल इनक्लूसिविटी सेतरे आपण दे परिबे ओके दैट कास्ट क्रीड से गुड़ा सबू आपण देखु नथले ओके तो से बैरियर्स भांगी की एनीवन कैन वर्शिप ओके विष्णु एंड हिज अवतार्स सो वैष्णव ट्रेडिशंस सेतरे सोशल इनक्लूसिविटी थिला जो थरे की कास्ट बैरियर्स ओके से माने मानु नथिले तो टेंपल वर्शिप हो कि रिलीजियस फेस्टिवल्स हो सेथरे सोशल इनक्लूसिविटी से माने इंक्लूड करूथले तो सेटा एक्सेसिबिलिटी आसी गला ओके सो कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी तापरे आसिला फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस रे कोन आपण लिखि परिबे फर्स्ट तो हैला the divine grace of Lord Vishnu. So said that was a central component of Vaishnavism. Okay, the grace of Lord Vishnu, prasada जोटा कोटले. Okay, so सही concept रू एबे जो आपनकर सब डिवोशनल एटीट्यूड अछि आपनकर जो माने बिलीवर्स अछंती. ओके तांकर आउ जो सब ऑफरिंग्स दिया होचे टेंपल्स रे तो सेटा एई कांसेप्ट संगे रिलेटेड. ओके तापर आउ गोटे भी पॉइंट आपण फिलोसॉफिकल फाउंडेशन अंडर रे लिखि परिबे कि जो सैक्रेड टेक्स्ट उडा थिला और ता टीचिंग्स उडा थिला एमती भगवत गीता हे गले
ओके तो सेथुरु रिचुअल्स भजन्स एक्सेट्रा दे वर डिराइव्ड सो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस तापर से गोटे कहूँ कि मॉडर्न डिवोशनल प्रैक्टिसेस संगे कंपेयर करंतु ओके सो मॉडर्न डिवोशनल प्रैक्टिसेस तो बहुत गुड़े जिनस आम तो लिख पार प्रथम है कि पिलग्रिमेज ओके तो जो वैष्णव आचार्य माने थिले से माने बहुत गुड़े वैष्णवाइट पिलग्रिमेज ओके साइट्स गुड़ा से माने ओके बने वृंदावन है गला साउथ रे आपण तिरुपति गरिका पाइजिबे एंड अदर्स आर आल्सो देयर ओके सो पिलग्रिमेज ओके तापरे नेक्स्ट है ये जो वैष्णव कल्चर टा वर्ल्ड वाइड स्टेज को पहुंचबारे बहुत गुड़े ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर जमती कि द इस्कॉन मूवमेंट हो गला तो से माने वैष्णव टीचिंग्स आउटसाइड इंडिया नहीं कि ताको प्रमोट कर ओके एंड थ्रू मीन्स एंड मोड्स जोटा कि बहुत ही पॉपुलर है वेस्टर्न नॉट ओनली वेस्टर्न ऑल पार्ट मैंने रशिया गरिका भी जदि आप देखिए सेठी भी इस्कॉन रो बहुत बड़ फॉलोइंग अच्छी ओके एंड केमिति से माने कले जमती चैतन्य महाप्रभु जो कॉन्सेप्ट गुड़ा कही कीर्तन हो गला योग हो गला स्पिरिचुअलिटी हो गला सो ग्लोबल स्प्रेड नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट ओके तापरे आउ कौन ना सिंबोलिज्म लॉट ऑफ वैष्णवाइट रिचुअल्स ओके तार पूरा स्ट्रिक्ट सिंबोलिज्म अच्छी जोड़ा कि एबे जब देखिए द बिलीवर्स जो मैंने हिंदूज अच्छा से मैंने प्राय ओके से गुड़ा आइडेंटिफाई कर सहित जमती कि तुलसी वर्शिप हो गला ब्लोइंग ऑफ द शंख हो गला ओके तो दीज वर बेसिकली द इफेक्ट ऑफ आउटरीच ऑफ द वैष्णव मेटाफिजिक्स ओके सो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख पारे रिचुअल सिंबोलिज्म ओके दैट इज रिचुअल सिंबोलिज्म आउ कौन पॉइंट्स आम दे पारिबा वेरियस फेस्टिवल्स जोड़ा आम सेलिब्रेट करूँ वैष्णवाइट फेस्टिवल्स जन्माष्टमी हो गला रामनवमी हो गला ओके किंबा एनी अदर फॉर्म ऑफ वैष्णवाइट फेस्टिवल्स आमर लॉर्ड जगन्नाथ कर जिते फेस्टिवल्स अच्छी ओके आमर एक्चुअली आम सेटा परे भी गोटे क्वेश्चन अच्छे आम देखा कि जोटा कि उत्कलीय वैष्णविज्म आउ गौड़ीय वैष्णविज्म भितर आमर सब्सटेंशियल डिफरेंस अच्छी गौड़ीय वैष्णविज्म माने गौड़ को जगह कहला बेंगल ओके सो गौड़ीय मीन्स जो चैतन्य महाप्रभुंकर जो वैष्णविज्म टा विच इज द गौड़ीय वैष्णविज्म एंड द उत्कलीय वैष्णविज्म जोटा कि लॉर्ड जगन्नाथ कर कल्चर टा ओके से केते गुडे डिफरेंसेस अच्छी गोटे क्वेश्चन अच्छी फुल सिलेबस टेस्ट रे से क्वेश्चन रो गोटे गोटे टाइप रो फॉर्म रे देछि तो सेटा हम डिस्कस करिबा ओके वी विल सी दैट तेनु नेक्स्ट हैला फेस्टिवल्स सो वैष्णवाइट फेस्टिवल्स से एग्जांपल टा आपण से पॉइंट आपण दे परिबे तापरे लास्ट कौन आपण डेली रिचुअल्स ओके जोटा कि हाउस होल्ड लेवल रे जमती कि आपण पूजा करिबा भोग देवा ओके टू लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनकार्नेशंस तेणु गोटे पर्सनल लेवल रे भी आपणकर डिवोशन टा ओके ए वैष्णवाइट कल्चर जदि आपण देखिबे सेथरे जो माने बिलीवर्स अछंती बिलीव करछंती एबे भी से माने करन. So all these were contributions of the Vaishnava
Acharya's teachings. Okay, so last point आपण लिखि दे परिबे daily rituals. ओके आपणकर जो मॉडल आंसर दिया ऐप रे तो एथरे आपणकर एई आंसर टा 248 वर्ड्स रो अछि so you can add 20 words to it. Okay, length wise ठीक अछि 248 words. Okay, 250 पाखा पाखी अछि ठीक ही अछि बुझ पाले एटा हला क्वेश्चन नंबर 13. Now let us go to question 14. So before going to question 14 आपणकर एटा फर्स्ट टेस्ट रो डिस्कशन हमें करछु. ईच टेस्ट को हमें 20टा क्वेश्चन जो रहउची ताको हमें डिवाइड कर देइछु चारटा पार्ट्स रे सो दैट हमें ईच क्वेश्चन डिटेल्स रे डिस्कस कर परिबा. ओके सो ऑलमोस्ट ईच टेस्ट पे हमें 4 घंटा टाइम रखुछु 20टा क्वेश्चन. ओके 4 आवर्स पाखा पाखी हमरो डिस्कशन रहउची ईच टेस्ट रो. क्वेश्चन 14 को आसन नले 20टा क्वेश्चन एका संगारे ताको डिस्कस कलालु कोन ना सब पॉइंट्स हमें टच करि परिबानी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज जो कि 2 घंटा रे सर दियो कि 1 आवर रे सर दियो सेति पई वी हैव गिवन 4 आवर्स फॉर ईच ऑफ द टेस्ट. 40टा टेस्ट अछि तार डिस्कशन हमें 4 आवर्स रे करबा. ओके 1 आवर रो करबा सो दैट आपन स्पैन ऑफ अटेंशन टा भी ठीक रहइबो घंटे रे 5टा क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन को आसंतु. In what ways did the Sufi movement facilitate cultural and spiritual syncretism in medieval India? Okay, दीटा उपरे आपण को फोकस करिवार अछि. कल्चरल syncretism आउ spiritual syncretism. Okay, Sufi movement केमिति सेटा medieval India रे आणला. That is the main requirement of the question. Okay, so 1 की 2 lines रो introduction अपन दे परिबे. Okay, that the Sufi movement सेटा blended the Islamic mysticism with Indian traditions, indigenous traditions. ठीक अछि तो पॉइंट्स पे कौन कौन लिखिबा. तो फर्स्ट हला रिलीजियस हार्मनी को केमिति प्रमोट करथला. सो प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी. Okay, promotion of religious harmony. Sufi movement religious harmony को okay it promoted religious harmony. केमती से मैंने कले सेटा फर्स्ट तो हला कि जो लोकल प्रैक्टिसेस थिला से माने ताकू अडैप्ट कले. एडाप्टेशन ऑफ लोकल प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स आपण एथरे दे परिबे कि डांस आउ म्यूजिक रे से माने कवाली आउ समा. ओके एई सब टाइप रो से माने सेशंस करिका कले जोडा कि बहुत ही पॉपुलर हैला लोकन को संगे. ओके कवाली आउ समा एग्जांपल्स दे परिबे. एडाप्टेशन ऑफ लोकल प्रैक्टिसेस. एग्जांपल अपन दे परिबे कवाली एंड समा. ओके प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी अंडर रे. तापरे आउ कोन पॉइंट्स दे परिबा में प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी अंडर रे. तो दे एम्फसाइज्ड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ओके द इक्वालिटी हला लव टॉलरेंस. ओके एंड
एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ पीपल ओके जो माने हिंदूस थिले मुस्लिम्स थिले अदर कम्युनिटीज सिख्स एंड ऑल से माने भी अट्रैक्टेड हेले ओके सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड ओके तो यहाँ गला आपनकर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी तापरे जो भक्ति मूवमेंट जोटा कि बहुत ही पॉपुलर थिला ता संगे भी इंटीग्रेट कराला सो इंटीग्रेशन विथ भक्ति ट्रेडिशंस integration with bhakti traditions ओके सो भक्ति ट्रेडिशंस संगे जो सूफी ट्रेडिशंस को अमेलगेट कराला इंटीग्रेट कराला तो तांकर जो भक्ति सेंट्स थिले आउ सूफी सेंट्स थिले ओके तो से मानकर शेयर्ड वैल्यूज थिला ठीक अछि जेमति कि गोटे पर्सनल गॉड को से माने मानुथिले ओके सिंपल लाइफस्टाइल आउ पूरा स्ट्रिक्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को दी जन जाक रिजेक्ट करथिले सूफीज भी आउ भक्ति सेंट्स भी ओके सो शेयर्ड वैल्यूज ओके तापरे आउ कोन हमें कहि परिबा इंटीग्रेशन विथ भक्ति ट्रेडिशंस देयर वाज इंटरफेथ डायलॉग्स ओके जेमति कि संत कबीर हेले गुरु नानक देव हेले ए माने जो सूफी मिस्टिसिज्म थिला आ भक्ति फिलोसॉफी थिला ताको अमेलगेट कले ओके जेमति कि पूरा सोशल हार्मनी रहइबो सो इंटरफेथ डायलॉग्स ठीक है तापरे नेक्स्ट पॉइंट तो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस कौन थिला आर्ट और लिटरेचर में सो आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस ओके तो फर्स्ट तो है आपणकर जो लिटरेचर से क्रिएट है सेटा गोटे सिंक्रेटिक लिटरेचर थिला सिंथेसिस थिला ओके वेरियस लोकल लैंग्वेजेस करिकार जेमति कि आमिर खुसरो हेले ओके सी तांकर पोएम्स जो लिखिले सेथरे पर्शियन अरेबिक इंडियन लैंग्वेजेस ताको ब्लेंड करके लिखिले तेणु मल्टीलिंगुअल टाइप रो वर्क सब आपणकर रहला सो फर्स्ट पॉइंट सिंक्रेटिक लिटरेचर सिंक्रेटिक लिटरेचर तापरे म्यूजिक और आर्किटेक्चर भी जदि हमें देखिबा जो फॉर एग्जांपल दरगाह जोड़ा है सूफी श्राइन्स गुड़ा आउ सूफी डिवोशनल म्यूजिक ओके तो सेथरे आपण इस्लामिक आउ इंडियन आर्टिस्टिक एलिमेंट्स रो कॉम्बिनेशन देखिले तो गोटे टाइप रो कल्चरल यूनिटी आपण कहि परिबे जोड़ा कि आगु को जाय कि आपण कहले गंगा यमुनी तहजीब एंड ओके terms like that were used so music and architecture तापरे फोर्थ पॉइंट रे हमें कौन लिखिबा कि बोथ ने सूफीज आउ भक्ति मूवमेंट रे भी सोशल इनक्लूसिविटी थिला ओके ता माने कोन ना इंदी कास्ट केही के आउटकास्ट नो समस्त आपनकर ओके
भक्ति की सूफी मूवमेंट रे जॉइन करि परिबे आउ तांको पर्सनल गॉड को निज हिसाब रे वर्शिप करि परिबे सो सोशल इनक्लूसिविटी ओके तो आ अंडर हमें कौन लिख परिबा सो वर्शिप रे आपनकर इनक्लूसिवनेस जो माने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थिले okay so there was no class and caste barrier okay so inclusiveness in worship आउ सोशल inclusivity भितर कौन पॉइंट्स आपण दे परिबे सो इंटरफेथ रिचुअल्स ठीक अछि जेमति कि दरगाह सूफी श्राइन्स थिला बट सेतरे यू नो हिंदूज माने थिले अलगा भी रिलीजन रो लोक जांकी ताको विजिट करथिले ओके आ सेठी ता माने कोन इंटरफेथ गैदरिंग्स होतला सेठी तेणु रिलीजियस हार्मनी आउरी बढ़िला एग्जांपल आपण अजमेर दरगाह को नहीं परिबे राइट सो इंटरफेथ रिचुअल्स आउ पॉइंट्स कोन हमें दे परिबा इकोनॉमिक साइड भी तार थिला ठीक अछि सो लोकल इकोनॉमीज को भी सपोर्ट करूथिले राइट द सूफी मूवमेंट सो इकोनॉमिक एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस इकोनॉमिक एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस ठीक अछि सो फर्स्ट तो हैला लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करथिले लोकल ट्रेड हैला ओके सो दैट गोटे शेयर्ड इकोनॉमिक स्पेस आपण को मिलिबो सो सपोर्ट फॉर लोकल इकोनॉमीज सपोर्ट फॉर लोकल इकोनॉमीज तापरे चैरिटी और वेलफेयर जेमती कि फ्री किचन जो लंगर्स को जाउतला ठीक अछि आउ लोक जो मन एक्चुअली से मन को पाखरे पैसा नथला कि जो भी कारण पे से खाई परिबेनी बाहर तो सेठी खाई परिबे से मन ओके सो दैट ब्रॉट पीपल क्लोज टू ईच अदर सो चैरिटी एंड वेलफेयर नेक्स्ट पॉइंट आपण दे परिबे इकोनॉमिक और चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस अंडर रे तापरे पॉइंट नंबर 6 जदि हमें देखिबा तो एडेप्टेबिलिटी ओके जो सूफी मूवमेंट अडैप्ट कला स्पेशली कल्चरल एडेप्टेशन ओके सो रीजनल लैंग्वेजेस से माने यूज कले तापर जो फेस्टिवल्स हैला ओके सेटा भी से माने एमालगेट करके गोटे सिंक्रेटिक सेलिब्रेशन कले जो थरे की से माने जेमति की हम एग्जांपल दे परबा उर्स ओके जो दरगाहs रे उर्स रो फेस्टिवल हुए सो सेथरे ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन ऑन कम्युनिटीज दे आर इनवाइटेड तो सेथरे कल्चरल यूनिटी आसिला okay so next point cultural adaptability cultural adaptability तो सेथरे आपनकर फर्स्ट हैला यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस जो सूफी मूवमेंट रे रीजनल लैंग्वेजेस बहुत यूज कराई छी so that more and more people understand कि सूफीज माने कौन कहया पे चाहछन यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस
आउ कौन पॉइंट्स हमें दे परिबे एथरे सिंक्रेटिक सेलिब्रेशंस ओके उर्स रो एग्जांपल एथरे दे परिबे सो जो सूफी श्राइन्स जोड़ा थिला दरगाह जोड़ा थिला तो सेथरे जेतले उर्स रो फेस्टिवल होतिला द पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज रिलीजन्स दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट तो सेथरे गोटे आपनकर कल्चरल यूनिटी फोस्टर हैला ओके सो एया आपनकर क्वेश्चन थिला इन व्हाट वेज डिड सूफी मूवमेंट फैसिलिटेट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिंक्रेटिज्म ओके इन मेडिवल इंडिया तो 12टी पॉइंट अपन देइचंती 6टा मेन पॉइंट्स अवतार दीदीटा सब पॉइंट्स ता ऊपर पुनी यू हैव टू राइट वन लाइन डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव ओके समय ऊपर सेटा डिपेंड करिवो राइट जो आपनकर दिया हिची मॉडल आंसर ए क्वेश्चन पई तार मॉडल आंसर र लेंथ होची 268 वर्ड्स ओके तो आज सेशन रो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 को जिबा सो एटा भी बुद्धिज्म ऊपर क्वेश्चन टा अछि बुद्धिस्ट लिटरेचर ऊपर ओके स्पेशली पाली लैंग्वेज ओके पाली लैंग्वेज ऊपर क्वेश्चन टा अछि This is the question. How does the evolution of Pali literature reflect the growth of Buddhist teachings and their dissemination across regions? Evolution of Pali literature ଆଉ growth of Buddhist teaching संगे आपण कंपेयर करी ठीक है क्वेश्चन टा बुझी पारले सो कैन अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस वन कि टू लाइन्स एटा दे 15 मार्क क्वेश्चन 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन आपण दे परिबे ओके कि केमती सेटा डिफरेंट जगह को स्प्रेड कला आउ पाली लिटरेचर आउ बुद्धिस्ट टीचिंग्स ओके ता संगे आपण कंपैरिजन करछंती इवन इंडिया रु स्टार्ट है कि साउथ ईस्ट एशिया पर्यंत ओके सो फर्स्ट पॉइंट आपण दे परिबे द ओरिजिन्स ऑफ द लिटरेचर एंड द कैनोनिकल टेक्स्ट्स ओके कौन एथरे ओरिजिन ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट रे तो फर्स्ट आपनकर आसी गला द त्रिपिटकस ओके सो त्रिपिटक कंपाइलेशन दैट यू कैन गिव okay so these were basically the Pali canons okay the Tripitakas आउ सेथरे लॉर्ड बुद्धंकर टीचिंग्स करिका ओके बेसिकली जोटा कि विनय पिताक जोतरे डिसिप्लिन ऊपर कुआइची सुत पिताक जोतरे बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स विषय कुआइची आउ अभिधाम पिताक जोतरे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी ऊपर कुआइची तो ता ऊपर आपण लिखि परिबे ओके सो तापरे ए जो टीचिंग्स करिका थिला लॉर्ड बुद्धंकर तो ताको केमती स्टैंडर्डाइज कराबो ठीक अछि तो जेतु जोटा पाली रे लिखा हितला जोटा कि लैंग्वेज ऑफ द मासेस ओके कॉमन लोक ताको बुझी पाउथिले तेनु बहुत गुडे लोक डायरेक्टली बुझुथिले कोन सेतर लिखा हिची तो दे वर क्लियर ओके आउ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स रो
consistency sethere rahila, that is standardization of teachings. If you compare that with the Brahminical religion, जोटा कि mainly Vedic Sanskrit रे लिखा होतला, which was not the language of the masses, okay, ताको देव भाषा कहा जाउतला, very few people knew how to read and interpret it. So जो माने ताको follow करथिले Brahminical religion को, से माने से तांको ऊपर depend करिया पे पड़तला, mainly the Brahmins तांको ऊपर depend करिया पड़तला, से interpret करिवे कौन जिनसटा अछि, कहीं ना से language टा difficult थिला, आउ common लोको सेटा बुझी पार नथले. Okay, so second point, origin and canonical text under रे. Second point, standardization of teachings. Okay, next point, तो जहाँ सब लिखाई कैनोनिकल टेक्स्ट रे ताकू आउरी सिंप्लीफाई करिया पे, जेमति कि डे टू डे लाइफ रे कॉमन लोक ताकू यूज कर परिबो. देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्रीज. ओके, सो द टीचिंग्स वर एक्सपेंडेड थ्रू कमेंट्रीज. सो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन थ्रू कमेंट्रीज. Expansion through commentaries. Okay, so एथरे अपन लिखि परिबे कि वेरियस जो commentaries करिका like the अट्ठा कथा literature, जो थरे कि डिफरेंट लोक माने तांकर कमेंट्रीज दोतले कि जो टीचिंग्स अछि लॉर्ड बुद्धंकर कॉमन लोक पई सेटा कोन से केमती बुझिबो से जिंसटा. ठीक अछि. सो दीज वर बेसिकली कमेंट्रीज. ओके, जो अट्ठा कथा लिटरेचर हमें कहूछु. ओके, जेमती कि बुद्ध घोषंकर, ओके, से तांकर बहुत गुडे कमेंट्रीज देइचंती. ता भितरु सबटु फेमस हैला विशुद्धि मग. ओके, सो how the teachings, the original teachings of Lord Buddha are to be used or how they are relevant for the current generation. ठीक अछि. तो से commentaries रे आपण पाउथले. तापरे regional adaptations होतला, regional language रे ताको translate करा होतला. तो आस्ते आस्ते कोन ना Buddhism became accessible through Pali literature and the translated regional literature. Okay, so गोटे mass religion सेटा आस्ते आस्ते हे गला. So regional adaptations. तापरे आउ कोन पॉइंट्स अपन रहला ना, ए जो पाली लिटरेचर थिला, ओके, इट वाज disseminated across regions. खाली इंडिया रे हेलानी, बाहर भी हेला. So dissemination across regions. Okay, dissemination across regions. So the growth of especially Theravada Buddhism. Okay, so जेमति कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सेठी आपणकर ओके तार बुद्धिज्म रो ग्रोथ और पाली रो ग्रोथ भी हैला.
ओके तापरे आउ भी गोटे जिनस ये जो डिसेमिनेशन रे मिशनरी एफर्ट्स भी बहुत हेल्प कला यू नो दैट बुद्धिज्म इज ए मिशनरी रिलीजन तो तांकर मॉन्क्स नन्स एमाने सब आ एमिसरीज माने सबआडे जाइकी तांकर रिलीजन को स्प्रेड कले जो थरे की बड़ बड़ किंग्स माने ओके एम्परर्स माने भी हेल्प कले अशोका फॉर एग्जांपल तांको पैट्रोनेज को तापरे पुनी अदर्स वर आल्सो देयर सो मिशनरी एफर्ट्स तो सेतरे पाली भी स्प्रेड हला और बुद्धिज्म भी स्प्रेड हला okay that is dissemination across region एथरे the growth of theravada buddhism and missionary efforts ए पॉइंट्स उडा में दे परिबा तापरे फोर्थ पॉइंट को आसंदो that is the philosophical and cultural influence okay so जो पाली लिटरेचर it influenced the development of ethics okay आउ meditative and philosophical practices जो गुड़ा कि आपनकर संघ रे बुद्धिस्ट संघ रे यूज हैला ओके इन द communities for the bhikshus and bhikshunis and also for the upasakas and the upasikas माने जो माने lay disciples थे ठीक अछि तो पाली रो डेवलपमेंट संगे रे पाली लिटरेचर रो तांकर संघर फिलोसॉफीटा भी डेवलप हैला ओके सो हेडिंग देबे आपण फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस so first development of philosophy okay so Pali literature जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी अच्छी तांकर एथिकल फिलोसॉफी हैला मेडिटेशन रो स्टाइल्स हैला ओके जो प्रैक्टिस गुडा तांकर मोनास्ट्री रे होतला ओके फॉर द भिक्षुस एंड भिक्षुनीज आल्सो फॉर द उपासकस एंड उपासिकास ओके तो सेगुडा सबु डेवलपमेंट आपण कहि परिबे विथ पाली लिटरेचर ऑल दोस थिंग्स बिकेम कोडिफाइड ओके तापरे कल्चरल सिंक्रेटिज्म भी आपण कहि परिबे ओके तो ये जो पाली लिटरेचर रो जो टेक्स्ट करिका थिला ताकू देखि कि जो लोकल आर्ट आर्किटेक्चर रिचुअल्स ओके सेगुडा भी डेवलप कला सो कल्चरल सिंक्रेटिज्म नेक्स्ट पॉइंट जो पाली लिटरेचर आउ तरह में हो चुकी तरह ओके स्प्रेड टा ठीक अछि तो सेटा आपण द कंटिन्यूइंग लेगेसी ए पर्यंत जोडा कंटिन्यू करूछ ओके सो दैट वी कैन राइट अंडर एंड्यूरिंग लेगेसी तो अंडर हमें कौन लिख परिबा गोटे तो हला कि पाली बिकेम वेरी इंपोर्टेंट इन एजुकेशन स्पेशली द संघ एजुकेशन मोनास्टिक एजुकेशन ओके जो थरे कि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़िला ओके सो रोल इन एजुकेशन आउ कौन हमें पॉइंट्स दे परिबा पाली ओके गोटे ग्लोबल लैंग्वेज है गला राइट सो इवन नाउ यू विल फाइंड दैट इंडिया रे जते काम होची बाहर आपनकर
बेसी काम होची पाली ऊपर सो ग्लोबल स्टडीज ओके तापरे जो पाली रो जो नॉलेज टा थिला ओके तो सेगुड़ा ओरल ट्रेडिशन ओके पाली हेल्प थ्रू ओरल ट्रेडिशन गोटे जनरेशन आ गोटे जनरेशन को कहबो ओके तो से जो प्रिजर्वेशन थ्रू ओरल रिसाइटेशंस ओके सेटा भी आपणकर स्प्रेड ऑफ द पाली लिटरेचर एंड द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से तरह हेल्प कला सो ओरल ट्रेडिशंस तापरे नेक्स्ट है जो बुद्धिस्ट संघ थिला ड्यू टू द यूज ऑफ पाली ओके तो से तार गोटे आपण कहि परिबे गोटे स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्टअप हैला जो थरे कि गोटे शेयर्ड आइडिया ओके सेटा स्प्रेड करा हैला राइट सो कम्युनिटी बिल्डिंग दैट इज द बुद्धिस्ट संघ ओके सो आपणकर जो मॉडल आंसर्स देइची से थरे ए आंसर टा 275 वर्ड्स रच मु काहे कि सब क्वेश्चन रे लेंथ ऑफ द मॉडल आंसर टा कहूची काहे कि ना आपण जानिबे कि आपण जेतले मॉडल आंसर कि ओटे जिंस भाबुचंती सेम रेंज रे भाबिबे 250 वर्ड देइची मु आपण 600 वर्ड रो मॉडल आंसर देबी किछि लाभ नै कहीं आप 25टा पॉइंट जान थे कि सेठी तो लिखी हम ना सेठी जेतिकीटा आप 7टा 10टा जहाँ भी आप स्पीड हिसाब रे आउ समय आप केतिकी नौचंती से हिसाब रे आपन लिखिबार अछि ओके सो 275 वर्ड्स रो आपन दिया अछि सो एटा हला हमर टिल आवर क्वेश्चन नंबर 15 ओके दिस इज टिल आवर क्वेश्चन नंबर 15 तो बिफोर we end amaro ei jo test series au crash course au optional crash course au optional test series okay ता विषय रे मु किछि बेसिक इंफॉर्मेशन आपन को देबी सो टेस्ट सीरीज जोटा हमें डिस्कस करथुलु ता छडा हमर जो एई गुडा हमर कोर्सेस रहिछि 2023 ओडिसा सिविल सर्विस मेंस पई फर्स्ट तो आपनकर मेंस इंटीग्रेटेड बैच रहउछि जोतरे टोटल सिलेबस आपनकर कवर रहउछि जीएस पेपर 1 2 3 4 एसए आ आपनकर कंपलसरी इंग्लिश और कंपलसरी ओडिया रो सेथरे आपनकर टोटल थ्योरीटा रहउछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रोची टेस्ट सीरीज रोची 40टा टेस्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोची और 8टा प्रिंटेड बुक्स आपनकर भी रोची जोटा कि एई बुक्सडा एमती 8टा प्रिंटेड बुक्स अछि जोटा कि मेंस रो पूरा सिलेबस नोट वाइज फॉर्मेट रे आपन को कवर कराई कि दिया होची ओके तो सेटा आपनकर कोर्स फी तार रोची 7000 ऑनलाइन आउ 10000 जो माने क्लासरूम रे जॉइन करिया पे चाहउछंती फिक्स टाइमिंग रोची तारो 4 घंटा दिन को ओके 4टा रु 8टा आ एटा क्लासरूम रे शहीद नगर सेंटर भुवनेश्वर रे रोची एंड ऑनलाइन एटा अवेलेबल रोची ओके तो क्लासरूम एटा 10000 ऑनलाइन 7000 एतरे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल 8टा बुक रोची ऐप एक्सेस 1 ईयर पर्यंत रोची क्लासेस आपनकर चलिबो टिल द मेंस एग्जाम ओके तापरे लाइव आउ रिकॉर्डेड क्लासेस रोची जो 4टा रु 8टा क्लासटा रोची सेटा नेक्स्ट डे आपनकर रिकॉर्डिंग्स भी आपण एक्सेस कर परिबे ऐप रे टेस्ट सीरीज पूरा जोटा डिटेल टेस्ट सीरीज अछि 40टा सेट्स रो आंसर राइटिंग आउ एथरे इंटरव्यू सपोर्ट भी इंक्लूडेड रोची ओके जदी जने केवल टेस्ट सीरीज दवा पई चाहउचंती तो तीनटी टाइप रो टेस्ट सीरीज हमर अछि 40टा टेस्ट
20टा टेस्ट आउ 10टा टेस्ट 40टा टेस्ट रे आपणकर ओके माने चैप्टर और मॉड्यूल वाइज टेस्ट प्लस फुल सिलेबस टेस्ट सेगुड़ा इंक्लूडेड रोची एथरे जीएस पेपर 1 2 3 4 एसे कंपलसरी इंग्लिश और कंपलसरी ओडिया सबु टेस्ट रो एथरे इंक्लूडेड रोची ऑप्शनल चढ़ा ऑप्शनल रो टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल रो जोटा कि आपणकर क्रैश कोर्स सेटा अलगा रोची ओके तो आर कोर्स फी क्लासरूम पाई 5000 रोची ऑनलाइन 3500 रोची आर टेस्ट सेंटर्स भुवनेश्वर शहीद नगर भुवनेश्वर खंडगिरी कटक किंबा आपण ऑनलाइन भी दे परिबे ओके तार शेड्यूल ऑलरेडी ओके 40टा टेस्ट रो डिसेंबर 19 रु स्टार्ट हेलानी मार्च 24 पर्यंत 25 पर्यंत चलिबो 40टा टेस्ट ठीक सेमती आपण 20टा जदी दवा पई चाहउचंती ओके किंबा 10टा दवा पई चाहउचंती डिपेंडिंग ऑन योर ओके कंफर्ट एंड योर रिक्वायरमेंट ठीक अछि तो सेटा आपण शेड्यूल देखि कि निजे डिसाइड कर परिबे तार कोर्स फी अलगा अछि 20 टेस्ट पई क्लासरूम 3000 ऑनलाइन 2500 ओके आउ 10 टा टेस्ट पई क्लासरूम 2000 ऑनलाइन 1000 रोज ओके तो एटा गला आपण को टेस्ट सीरीज टा नेक्स्ट आसला ऑप्शनल रो क्रैश कोर्स आउ टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज छोटा तो एटा हला जो स्टूडेंट्स माने कोर्स टा भी कंप्लीट करिया पे चाहउचंती ऑप्शनल रो प्लस टेस्ट सीरीज दवा पे चाहउचंती प्लस सेतरे अलगा भी केते जिंस अछि जेमति कि कवरेज ऑफ थ्योरी आपण कर रहउची पूरा ओपीएससी सिलेबस हिसाब रे थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप एक्सेस रहउची 1 ईयर पे 16 टा टेस्ट आपण कर रहउची टेस्ट सीरीज 3 आवर्स ईच टेस्ट ओके आउ प्रीवियस ईयर रो सॉल्व क्वेश्चंस आपण कर रहउची ऐप रे जोडा कि 2011 रु 2022 पर्यंत अछि तो जो ऑप्शनल पे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज रहउची सोशियोलॉजी पीएसआईआर ज्योग्राफी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री होम साइंस और लॉ 7000 आर कोर्स फी रहउची एटा ऑनलाइन ओनली ओके जदि आपण केवल टेस्ट सीरीज ऑप्शनल रो दवा पे चाहउचंती तो एतरे 16 टा टेस्ट रहउची ओके ऐप एक्सेस आपण को 1 ईयर पे रहइबो आ 16 टा टेस्ट सीरीज रहउची जोतरे कि 4 डेज रे इवैल्यूएशन होची आ आपण को मॉडल आंसर टा रहउची तो एतरे सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पबैड हिस्ट्री होम साइंस एंथ्रोपोलॉजी फिलोसॉफी साइकोलॉजी एजुकेशन एवं लॉ एई पेपर सुड आपण को रहउची ओके सो आर डिटेल्ड शेड्यूल करिका दियाई चेटी सबु ऑप्शनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होची जनवरी 4 रु आउ चलिबो मार्च 2 पर्यंत 16 टा टेस्ट रहउची सबु थरे ठीक है सो यू कैन गो थ्रू द सिलेबस इन डिटेल्स ओके शेड्यूल टा दियाई ची ए पीडीएफ टा आपण एक्सक्यूज मी हमर टेलीग्राम चैनल रे पाई जिबे ओके सो हमर आज कंप्लीट कलु थर्ड डिस्कशन थर्ड पार्ट ऑफ टेस्ट 1 लास्ट पार्ट टा आमे नेक्स्ट सेशन रे कंप्लीट करिबा देन वी विल गो टू द डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 2 ठीक है जी सो आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रिपेयर वेल डोंट वेस्ट टाइम फालतू गॉसिप किंबा एमिति कोनोसी जिंस जोटा आपण का हाथ रे नाही से थरे समय मोटर नष्ट करंतुनी केते वैकेंसीज बाहरिबो केबे रिजल्ट बाहरिबो ओके जस्ट डोंट से थरे हमर पॉसिबल ही नहीं आपनकर यदि एक्स्ट्रा टाइम अछि आपण आउ थरे रिवाइज करंतु किछि वैल्यू एडिशन करंतु ओके जेमति कि इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स तो सेटा भी टेस्ट सीरीज रो पार्ट रहिबो किछि वैल्यू एडिशन हमें देखिबा इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जोडा हमें देई परिबा ओके जोडा कि आरी भितरे लास्ट 4-5 मंथ्स रो इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स करिका ओके एनीवे सो विश यू ऑल द बेस्ट प्रिपेयर वेल नमस्कार।